Now let's move to the other components. Customer relationship, very important for an any entrepreneur. I have personally seen few people who are young in the market, young entrepreneurs. When I say young, it doesn't mean age. It means that they are very new to the market. I have seen them, they decided a day or in the every evening, they just picks up the phone and dial to their customers and ask them, this is personal assistance. There is an example of personal assistance as well, that Apple Genius Bar, if you know. So what Apple does, that you can book appointment with the Apple Genius. They call their representatives as Apple Genius. You book your appointment with them. You go to their store. So there is a bar kind of table. Other side of the table there will be executives from Apple, and you can do one-on-one discussion with them. They can tell you that how if you have broke your phone unfortunately, then they will tell you that how the repair works goes, and how repair will be done, and what all the uh, consequences. Once you get repair, you should replace, you should buy. So there are so many things. So this is Apple Genius Bar. So personal assistance they create, right? Then automated services are in there, autobots, chats you can do, right? That's how you can get in touch. Communities like Harley Davidson motorcycle is very popular for that. That they create communities all around. There are a lot of bikers. Gangs of bikers are always there. So they provide you that the feeling of, yes, we are part of one single community. So there are several ways of doing customer relationships. The idea is of this component, it is very, very important to keep in touch with your customer. The customer should feel special, and it's good for you and your businesses as well. That's how you'll improve, right? Revenue streams, how do you make money? We have discussed it, paisa. Because money is the key, you know that, right? Sales, if you have a product, sell it. If you have a platform, subscription fees. If you are in touch with government, then provide some licensing like ISO. There are a lot of ISO companies, right? They are the agents for the ISO industry or the ISO committee, right? International Standard Organization. And you, as an you can get some certifications. You can open your ISO form. They can certify you. Then you can further give licenses of ISO to the organizations. This is one example. Licensing business, then advertising, right? Some organize like YouTube. You go to YouTube, it's free. You just log in, you start watching videos, but you get to see a lot of advertisements there. So that's how YouTube are earning through advertisement. So these are the revenue streams. We have discussed it, that how to make money. Then key resources. What do you need to deliver your value? That's the most important. But within an organization, as an entrepreneur, in your organization, in your company, your business model asks you that what do we need? You need physical thing. When we say physical thing, it means machines and tools. And for an example, that you are developing a business model for a business of mobile phone, then you need a lot of machines. Those are creating raw material into the uh, frames, and then the assembly line will be done. So this is physical asset we require. Then intellectual asset. When we say intellectual asset, it means that all the licenses, all the compliances, all the trademarks, and your company's name, registration, GST numbers, ID, the n number of intellectual assets you require. Then human resources, like people who works in. You need staff members as well. So that is human resource. Then financial resources, capital. You get funds or you have your own money. So these are the key resources are required. What do you need to deliver your value? You already find out an opportunity, you are working for it, you know your customer, you are creating a business model. So how do you provide that solution to people? For that, what does you required? We required machineries, we required trademarks and company registration, we required staff members, we required financial resources. And if you are not into the manufacturing business, then uh, then you have to be tie up with certain people.
right? Like Oyo is tied up with some hotels so that as a customer, when you go to Oyo website, there are a lot of options available. They may not need machines, but they required, so they are more into the intellectual and human model other than the physical model. So that's how a car company, Mahindra and Mahindra, for an example, they are more into the physical because there are a lot of machines are there, assembly line of cars, manufacturing, right? So we need to understand that what we required as an organization, and we have to segregate it very carefully because everything cost is everything. You have to be very careful while selecting our physical assets, intellectual assets, human assets. पर जरूरत से ज्यादा मशीनरी भी नहीं रख सकते, खराब हो जाएगी, फायदा नहीं है। बहुत ज्यादा अननेसेसरली पेपर वर्क भी नहीं करना है कि जिसकी जरूरत भी नहीं है वो भी लेके बैठ गए। एक फूड कंपनी है, एक फूड रेस्टोरेंट है, वो फूड ही चलाना है, उसको पता है कि मैं फूड चलाता हूँ, वेजिटेरियन फूड बेच रहा है, उसने लाइसेंस ले लिया अब अल्कोहल का भी और सर्व कर नहीं रहा है अल्कोहल, तो वेस्ट है ना रेस्टोरेंट के लिए। वो पैसा अल्कोहल का लाइसेंस 1.5 2 3 लाख का 4 लाख का आएगा साल का, लेकिन उसने साल भर में अल्कोहल बेची नहीं, उसने बार खोला ही नहीं, उसने सिर्फ फूड चलाया, रेस्टोरेंट चलाया, तो उसके लिए वो लाइसेंस वेस्ट हो गया ना। तो वो भी नहीं करना, है ना? लोगों को ज्यादा लोग नहीं हायर करने, यू कैन नॉट हायर पीपल लाइक एनीथिंग, जितने ज़रूरत है उतने करोगे। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल while doing this. Then key activities, what do you need to do? The most important action a company must take to operate successfully, right? सी, यहाँ पे हमने पीछे डिस्कस किया था आपकी रिसोर्सेज की, रिसोर्स यहाँ पे आ गया की एक्टिविटीज। उन रिसोर्सेज के साथ क्या करना है? प्रोडक्शन करना है, मशीन से तो प्रोडक्शन होगा, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स है तो उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, प्लेटफॉर्म नेटवर्क मेंटेनेंस होगा। आपने अगर आप एक आईटी कंपनी खोली है, आपने कोई सर्विस कंपनी खोली है, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम बात करते हैं नेटफ्लिक्स ही है, चलो हम नेटफ्लिक्स ले लेते हैं एंटरटेनमेंट कंपनी। नेटफ्लिक्स पे बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी फिल्में हैं, राइट? और वो एक प्लेटफॉर्म है। अब उस पे आप ओपन कर रहे हो, मूवी चल नहीं रही है, एरर आ रहा है, तो वो नेटफ्लिक्स के कस्टमर तो गिरेंगे ना, तो नेटफ्लिक्स को हमेशा उनको वो मेंटेनेंस हमेशा चलता रहता है बैकएंड पे कि यार कुछ रुके ना। अगर एकदम से कोई अच्छी मूवी आ गई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, स्लो हो गया, फिर डेड हो गया नेटवर्क, वो भी नहीं हो सकता, उसकी मेंटेनेंस चलती रहेगी, राइट? So we need to understand that when we see बिजनेस मॉडल कैनवस, अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखो, पहले से लेकर कस्टमर सेगमेंट, वैल्यू प्रोपोजिशन, चैनल्स, कस्टमर रिलेशनशिप, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, की रिसोर्सेज, की एक्टिविटीज, यहां तक अभी तक एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग, कैन नॉट स्किप एनीथिंग, राइट? So that's why we are discussing about the key activities. What do you need to do? We need to we need to talk about the assets we have. We need to discuss about it, and then we have to create a strategy about it, that how our production will go, how we can continuously do the problem solving for us as well, because there would be some time when you will stuck. So your business model should be so impactful and your assets should be so useful so that you can solve that problem. your your network, and when I say network, it does not only mean the IT network, your outside network as well। हमने डिस्कस किया था लास्ट मॉड्यूल में, नेटवर्किंग, फिजिकल एक्टिव नेटवर्किंग भी चाहिए ना। आप एक कंपनी चला रहे हैं, आपका बाहर नेटवर्क कैसा चल रहा है लोगों के साथ, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंटेग्रल पार्ट कि आप अपना कैसे नेटवर्क मेंटेन करके रखते हो। प्लेटफॉर्म नेटवर्क मेंटेनेंस यहाँ पे, यस इट इज रिलेटेड टू आईटी, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द अदर नुआंसेस एज वेल, राइट? एंड की पार्टनरशिप, who who can help you succeed। इसका एग्जाम्पल हमने एक डिस्कस किया था स्टारबक्स के साथ। स्टारबक्स ने मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर कप्स लेकर आए थे, तो मनीष मल्होत्रा का नाम यहाँ पे स्टारबक्स को हेल्प कर रहा है to increase their sales into that cup business, and vice versa they are also helping him, he is becoming a bigger name। So that's why joint ventures होते हैं, strategic alliances होते हैं। इसका आगे हम डिस्कस करेंगे, पर एक इसका एग्जांपल है उबर एंड स्पॉटिफाई। आप कस्टमाइज कर सकते हो अपना म्यूजिक, ऊबर पे बैठ के ना, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, ये एक बिजनेस मॉडल है, ये लेकर आए हैं साथ में। तो ऐसे बहुत सारी आप देखते हो कि को ब्रांडिंग होती है किसी किसी चीजों में।
प्यूमा है, प्यूमा के साथ बीएमडब्ल्यू मोटर स्पोर्ट का है को ब्रांडिंग का, उनके जूतों पे बीएमडब्ल्यू का लोगो होता है, मर्सिडीज का होता है, ऐसे ऐसे ही नाइकी और एप्पल का हुआ था। सो देयर आर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, जॉइंट वेंचर्स जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन कि आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपके बिजनेस के लिए व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर्स आर इम्पोर्टेंट, so that you can just maintain your networking with them, you just able to gauge them any point of time so that it can be useful for both of you and especially for you as an entrepreneur. There is no harm, अगर वो सही स्ट्रक्चर में आपके बैठ जाता है तो देर इज अ विन विन सिचुएशन। दैट्स व्हाई की पार्टनरशिप, द नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स एंड पार्टनर्स दैट हेल्प द बिजनेस मॉडल वर्क। हमने डिस्कस किया था अमेजोन के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, ई कॉमर्स है इनके लिए, जो सप्लायर्स हैं, जो courier companies, and they pay plays a very integral part, क्योंकि आपने कुछ ऑर्डर किया, आपके पास टाइम पे अगर नहीं आया तो इट्स अ प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाई इट इज द की पार्टनरशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन द लास्ट इज कॉस्ट स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली, you know what are your major costs, we have to identify for ourselves, right? All costs involves in operating business, fixed costs we have discussed कि जो तो होनी होनी है, हमको पता है कि हमारी फैक्ट्री के लिए मैंने स्पेस लिया या मैंने अपने ऑफिस के लिए स्पेस लिया, उसका 1 लाख रेंट है, तो एक अगले 1 साल तक 12 लाख तो वो आना ही आना है खर्चा, वो मेरा फिक्स कॉस्ट है, वो उसको मैं हटा नहीं सकता फिलहाल के लिए। एंड देन माई इलेक्ट्रिसिटी, इट्स इलेक्ट्रिसिटी इज समवेयर इज द वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ऊपर नीचे होगा, बट फिक्स कॉस्ट है कि मेरा ये बिजनेस में इतना पैसा जाना ही जाना है, राइट? मेरे को ये इन्वेस्टमेंट आएगी, इतने का प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे मार्केट में जाएगा, वो मेरे फिक्स कॉस्ट है, टैक्सेस मेरे फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। आज आप आप एक कंपनी हो और आपने कहा कि हम होम डिलीवरी कर देते हैं किसी प्रोडक्ट की अपने, और आपको आपने रेंज रखा 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर के अंदर आपसे कुरियर वाला कहता है कि सर जो जहां पे भी आप मेरे को भेजोगे मैं आपसे 100 रुपये लूंगा पर प्रोडक्ट, दैट्स योर फिक्स कॉस्ट, फॉर एन एग्जाम्पल। लेकिन जैसे ही आप उस दायरे को 15 किलोमीटर करते हो, तो वहां पे कुरियर कॉस्ट जो है वो वेरिएबल हो जाती है, क्योंकि वो कहता है कि अब 10 किलोमीटर तक तो एक कॉस्ट है, अब जब 15 किलोमीटर तक जाएगी तो कॉस्ट चेंज हो जाएगी, क्योंकि 10 पे तो वो अब वो ओवरऑल अप टू 10 वो एक 10 रुपए ले रहा था, हम 100 रुपए ले रहा था, हम एग्जाम्पल लेते हैं, अप टू 10 आप चाहे 1 किलोमीटर तक भेजो मेरे को, चाहे 10 किलोमीटर भेजो, मैं आपसे 100 रुपये लूंगा। लेकिन जैसे ही वो 15 किलोमीटर का उन्होंने दायरा दिया, तो उसने कहा कि अब मैं आपसे 150 रुपये लूंगा। सो एज पर द ऑर्डर दिस कॉस्ट कैन बी वेरी, किसी को कोई 3 किलोमीटर दूर है तो वो 100 रुपये लेगा, कोई 12 किलोमीटर दूर है तो वो 150 रुपये लेगा। सो दैट्स हाउ दिस इज just one simple example, very simple example, very raw example I'm giving you. You have to work upon your cost structure, your economics of scale, right? ये कैसे काम करता है? uh, आप आज एक पेन बना रहे हैं, इस पेन को बनाने में 100 रुपये लगते हैं, और आप 10 पेन बनाते हैं, तो आपका खर्चा हो गया 1000 रुपये। अब आपकी जो मशीन है उसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, वो एक दिन में 100 पेन भी बना सकती है, ठीक है? जैसे ही आप 100 पेन बनाएंगे ना, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ वन पेन है ना, वो 100 रुपये नहीं रह जाएगी, वो कम होकर 70 50 भी पहुंच सकती है, क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे और कहोगे मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो आपको रॉ मटेरियल भी सस्ता देंगे, क्योंकि आपने पहले सिर्फ 10 पेन के लिए खरीदा था, अब आप 100 के लिए खरीद रहे हो, वहाँ पे कॉस्ट कम हो गई। फिर आप अपनी मशीन की पूरी यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी में वो 10 पेन बना रहा था, उतने में वो बना रहा है अब 100 पेन, राइट? ऐसे ही और भी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जैसे ही आप स्केल करते हो किसी भी बिजनेस को, तो उसके जो इकोनॉमिक्स है दे शुड कम डाउन आइडली, राइट? क्योंकि वहां पे फिर बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, तो पर आपका वैसे कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आ जाना चाहिए, राइट? दैट्स हाउ कॉस्ट स्ट्रक्चर वर्क्स। So see, which is everything, it is very important for us to understand everything related to our business model very deeply, right? Because see what happens is that whenever we create a business model and we develop a business model and we are
at the verge of implement that business model, we need to understand that once we implement a business model, now it is very difficult to take a pivot from there in a very quick succession. We need to understand that. I'm not saying that a business model cannot be changed. It can, and many organizations do, and we have to do it as well. If there are some turbulence in the market, or the consumer is not happy, or we have received few strong feedbacks, but it cannot be very frequent. It cannot be very frequent. So you understand that customer segments, value proposition, channels, customer relationship, revenue streams, key resources, key activities, key partnerships, and cost structure. Very, very important components to understand, to create and develop a business model for any entrepreneur.